Hello everyone. So as we all know that only 6 months are left for upcoming NEET PG exam. So today we'll discuss the detailed strategy for the same. First of all, 6 months is a huge amount of time and you can definitely get a very good rank if you start preparing seriously now. If I'll tell about myself, I started preparing seriously 6 months before the exam only. So today we'll discuss the detailed strategy that you should be following in these 6 months. तो अभी आप लोग मोस्टली प्रिपरेशन फेज में हो गए एंड मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट रीडिंग और मस्ट बी इन दैट फेज. सो उसके आगे का विल डिस्कस टुडे. जो लोग ये पूछना चाहते हैं कि सर वी आर स्टार्टिंग टुडे, व्हाट शुड वी डू नाउ. सो मेरे को ऐसा लगता है कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा दैट द पर्सन हु इज स्टार्टिंग टुडे वी जनरली अंडर एस्टिमेट आवरसेल्फ. हमें हमेशा ऐसा लगता है कि अभी तक हम पढ़ नहीं रहे थे, वी शुड स्टार्ट टुडे. तो आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होगे. यू मस्ट बी सीइंग द वीडियोज, यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग सम नोट्स. तो यू कंसिडर योर सेल्फ इन द फेज. ट्राई नॉट टू अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ वाइल प्रिपेयरिंग. वरना आपको ना अभी ऐसा लग रहा है कि हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, 2 महीने बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि हम अब स्टार्ट कर रहे हैं. यू आर प्रिपेयरिंग, यू आर स्टडिंग मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग, है ना. You are not following any direction, that is one thing, but you must be preparing notes, you must be seeing the video, so you are in the phase. Now considering that most of you will be in the first reading or have completed that, I would really recommend कि आप 15 days और ले लो or take at least a month, but try to complete your first revision as soon as possible. Try to see the remaining videos or try to complete your notes. Now post that you would be going for your second revision. Now second revision, I would consider that it is the most crucial part of your preparation. सो फर्स्ट रिवीजन में एक बेसिक स्केलेटन तो बन गया है. जैसे इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ ह्यूमन बॉडी, तो बेसिक स्केलेटन आपने बना लिया. नाउ सेकंड रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट इन द आस्पेक्ट दैट नाउ यू विल कम टू नो व्हाट आर द वॉलेटाइल टॉपिक्स. नाउ यू विल कम टू नो व्हाट आर द कंसेप्चुअल टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट बेस्ड आ चुके हैं. सो इन दैट रीजनिंग ट्राई टू कीप अ 20th कॉपी विद यू अलॉन्ग साइड. Read the notes, try to segregate the volatile part, try to understand the conceptual part more so that in the subsequent revision you don't have to spend a lot of time on it. And now your mind knows कि कौन से important topics हैं, because आपने कहीं ना कहीं PYQs या कहीं ना कहीं question bank लगाया होगा. So now your mind would come to know कि कौन से important thing है, focus on that. So second revision is very important in this aspect. Now along with this, in this second revision phase of yours, try to give GT at least every 7th और 10th day. बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि एक बार रिवीजन और कर लेते हैं उसके बाद GT स्टार्ट करेंगे, बट ट्रस्ट मी, फर्स्ट रीडिंग खत्म हो गई, एक बार नोट्स बना लिए, ट्राई टू स्टार्ट गिविंग GT. देयर इज नो परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट गिविंग GT. हमेशा ऐसा लगता रहता है परफेक्ट टाइम आएगा, हम बाद में स्टार्ट करेंगे, बट देयर इज नो सच टाइम. ट्राई टू स्टार्ट गिविंग GTs इन योर सेकेंड रिवीजन ओनली. गिव ऑन 7th और 10th डे. ठीक है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, बट यू विल सून रियलाइज कि जब आप सेकंड रिवीजन में आगे बढ़ते रहोगे एंड आपके मोर एंड मोर सब्जेक्ट्स वुड बी कवर्ड, तो आपके मार्क्स सब्सिक्वेंटली अच्छे आने स्टार्ट हो जाएंगे. तो इन GTs पे अपने मार्क्स पे फोकस करने से ज़्यादा अपने मार्क्स के इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है. तो विल सी कि आपने पहली बार टेस्ट दिया एंड यू might be getting 300-400 marks, उसके बाद 400 to 500 आने लगेंगे, subsequently 500 to 600 आने लगेंगे, because more and more subjects would be revised. क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में तो आपने सिर्फ नोट्स बनाए हैं, वीडियोस देखी हैं, कंसेप्ट क्लियर किए हैं. सेकंड रीडिंग में you'll see the huge improvement in the marks in your GTs. Along with it, सेकंड रिवीजन में try to solve PYQs. तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं देना, because you will be revising, you will be giving GTs. बट आई वुड रिकमेंड व्हाट आई यूज्ड टू डू अस कि सोने से पहले ट्राई टू सॉल्व 20-30 क्वेश्चंस, एंड सुबह उठने के बाद ट्राई टू सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दोज क्वेश्चन. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग रात को सोते टाइम 15-20 मिनट फ़ोन चलाते हैं, हम सुबह उठने के बाद भी 15-20 मिनट फ़ोन चलाते हैं. तो ट्राई टू यूटिलाइज दैट थिंग एंड ट्राई टू सॉल्व PYQs इन दैट. सो फॉर दिस सेकेंड रिविजन along with the GTs part, take at least 2.5 to 3 months, and then you will be left with 2.5 months. तो इस 2.5 to 3 months में रिवाइज, गिव GTs, प्रिपेयर अ 20th कॉपी, and then you are good to go for the subsequent part. Now at this point of time you should be doing your image based questions. Now for that image based videos, what I would recommend is try to follow the same source that you have prepared your notes from. Suppose you have used Marrow for your revision and for your notes, try to do image based videos of Marrow only. If you have used Bhatia, try to do Vibe, that is the image based platform for image based questions of Bhatia. So
द रियल रीजन बिहाइंड इट इज कि सपोज आपने मैरो से मेडिसिन पढ़ी ना, अगर आप इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भाटिया से जाके करते हो, इमेज बेस्ड वीडियोस भाटिया से पढ़ते हो, तो जो इधर मेडिसिन में आपको ईसीजीज पढ़ाए गए हैं और इमेज बेस्ड क्वेश्चन में ईसीजी पढ़ाए जाएंगे, ऑल्दो द कंसेप्ट वुड बी सेम, बट द मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ both the teachers would be different. Now you will be confused and your brain would think that you don't know anything. Now similarly अगर आपने सेम प्लेटफॉर्म से आप करते हो तो योर माइंड वुड कीप kept on thinking कि हाँ ये पर्टिकुलर ईसीजी क्लास में भी दिखाया गया था या इन दैट पर्टिकुलर वीडियो भी दिखाया गया था एंड यू नो अबाउट इट, सो यू गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. तो आई वुड रिकमेंड कि ट्राई टू डू इमेज बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सोर्स. अगर आपने मैरो किया तो मैरो की इमेज बेस्ड वीडियोस देखो, प्रेपलेटर की प्रेपलेटर की इमेज बेस्ड वीडियोस देखो, भाटिया की है वाइब करो, डैम्स किया डीवीटी करो. डोंट फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली. आपके लिए दैट पर्टिकुलर सोर्स वुड बी द बेस्ट. नाउ कमिंग ऑन टू बीटीआर, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबको लगता है कि हमें बीटीआर कर लेना चाहिए. सो व्हाट माय टेक ऑन बीटीआर इज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रियली लाइक टू से कि ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल. हम लोग कैथ लैब में प्रोसीजर्स करते हैं, तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि जो भी कंसल्टेंट होते हैं वो अगर किसी केस को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, तो कि ये वाला बैलून भी यूज़ कर लेते हैं, ये स्टैंड भी यूज़ कर लेते हैं, ये वाला स्टैंड भी यूज़ कर लेते हैं, ये वाला मेथड भी यूज़ कर लेते हैं, तो द रिजल्ट्स वर नेवर गुड एट द एंड. एंड सिमिलरली कितना भी कॉम्प्लेक्स केस होगा, कोई कंसल्टेंट को उसको सिंपल बना देता है कि लाइक विल यूज दिस बैलून फर्स्ट, इफ नॉट देन दिस पर्टिकुलर बैलून एंड दिस पर्टिकुलर स्टैंड, दैट्स ऑल. द रिजल्ट्स वर डेफिनेटली गुड एट द एंड. ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल. यू आर रिवाइजिंग योर नोट्स, यू हैव योर 20th कॉपी जिसमें आपने वॉलेटाइल चीज़ें रखी हैं, दैट 20th कॉपी would be your BTR. You will spend another 7 days attending a BTR, then revising that, and again revising the same topics जो आपके notes में भी है, 20th copy में भी है from the BTR. And now the source would be changed, so your mind would think that maybe you don't know anything or you are not confident about it. And एग्जाम में भी ना बहुत बार रिकॉल हमें होता है कि हाँ ये पर्टिकुलर टॉपिक हमने कभी तो पढ़ा था, एंड अगर आप सेम ही सोर्स से पढ़ते हो तो वो रिकॉल इज मोर पावरफुल than if you read from the multiple sources. So my take would be try not to do BTR and revise your notes and 20th copy only. But if you really feel FOMO और आपको लगता है कि उसके बिना नहीं होगा या you are doing something really bad, then do attend it. It doesn't cause any harm, but at the same time what I think is कि it doesn't do any good to you because everything would be in your notes and as well as your 20th copy. Now coming on to the subsequent part of your preparation. So at this point of time, you will be left with 2.5 to 3 months. I would recommend you to divide it into 1.5 months, 1 month and last 15 days. Now in this 1.5 months, you have to revise your notes. One thing, अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि in the first revision or the second revision यही सेम नोट्स हमें 2 to 3 months लगे, 4 months लगे इन रिवाइजिंग. हाउ कैन यू से कि इस रिविजन में 1 to 1.5 months लगेगा. वन थिंग इज कि दीज आर योर नोट्स, आपने 2 बार पढ़ लिए एंड यू हैव सेग्रीगेटेड द वॉलेटाइल थिंग्स नाउ. एंड ऑल्सो योर माइंड वुड नो नाउ कि किस पेज पे क्या पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या नहीं है, कौन से चीज़ों के कंसेप्ट यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सो यू कैन अवॉइड इट. सो नाउ यू कैन डेफिनेटली रिवाइज योर नोट्स इन 1.5 months. And the volatile part that you have segregated, you have to revise them separately, so you also save time in revising them from your notes. Other than that, you have to give GT every 7th to 10th day in this part. And अभी इस पॉइंट पे ना बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था कि इस पॉइंट पे आपके जीटी के मार्क्स एक लेवल पे स्टैटिक हो जाते हैं, वो बढ़ते नहीं हैं. तो द स्ट्रेटेजी दैट आई वुड रिकमेंड इज कि आपको क्या करना है. सपोज यू हैव गिवन अ जीटी टुडे. नाउ उस जीटी पे यू कैन सी कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स वीक है. सपोज योर गायनी एंड पीडियाट्रिक्स आर वीक. नाउ बिफोर गिविंग द सेकंड जीटी, one day before giving the second GT, try to quickly revise the notes of pediatrics and gynecology. That way your weaker subjects will keep on getting stronger and your revisions will get better and your marks will keep on increasing. Now coming on to the subsequent revisions, but when your third revision will get completed in 1.5 months, at this point of time there might be that the time would be that कि आपका आईनी सेट का एग्जाम होगा. सो आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर आप पर्टिकुलरली नीट पीजी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, ट्राई टू गिव आईनी सेट एग्जाम फुल हार्टेडली. यू नेवर नो, वंडर्स डू हैपन. वी ऑलवेज अंडर एस्टिमेट आवर प्रिपरेशन. यू नेवर नो कि आपकी प्रिपरेशन हो सकता है बहुत अच्छी एंड यू विल गेट अ सीट इन एम्स, एंड इवन इफ नॉट, तो दैट एग्जाम विल get help you in knowing the level of your preparation, one thing, and also will help you in knowing the important topics that were asked in the INSET exam and that has the probability to get asked in the NEET PG as well.
So definitely give INSET exam full-heartedly. Now in the next 1 month, you have to revise your notes and also keep on giving GTs. एंड इस टाइम पे जीटी से पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू रिवाइज योर 20th कॉपी 1 day बिफोर द जीटी. सपोज आज आपको जीटी देना है, एक दिन पहले रिवाइज योर 20th कॉपी. दैट वे योर वॉलेटाइल थिंग्स वुड गेट keep on getting revised and they are no longer be volatile, and your GT's marks would keep on getting increasing. And one thing is कि जब आपके GT marks बढ़ने लगते हैं ना, it keeps on giving you the motivation. one thing कि आपका अभी रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट आना इज द बिगेस्ट मोटिवेटर. आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपका अगली बार पढ़ने का खुद मन करेगा. एंड अदर थिंग इज कि आपकी वॉलेटाइल चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी. नाउ coming on to last 7 to 15 days, although I'll make a complete video altogether for that because it's another game, but summarizing it, लास्ट 7 to 15 days में आपको नोट्स, सारे सब्जेक्ट के नोट्स को एक बार बस पेपर पलटने हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट ट्राई टू रिवाइज द 20th कॉपी एवरी डे और एवरी ऑल्टरनेट डे. एंड द रियल रीज़न बिहाइंड कि आप 20 अपने सारे 19 सब्जेक्ट के नोट्स के पेपर पलटोगे इन योर लास्ट 15 days इज़ यू विल बी फूलिंग योर ब्रेन इनटू थिंकिंग कि आपने अपने सारे 19 सब्जेक्ट रिवाइज किए हैं एग्ज़ाम से जस्ट पहले. सो योर माइंड वुड नॉट थिंक नाउ कि मैंने यार गायनी 2 months पहले पढ़ी थी एंड नाउ आई एम नॉट श्योर दैट आई नो अबाउट इट और नॉट. And definitely, since these are your notes, when you will be turning pages, your mind will focus on the important aspects, on the important information that are there on these pages, and that way your notes will get revised. You will be feeling more confident, and since you will be revising your 20th copy, your volatile topics would be covered in that part. So that way you'll be fully prepared for the exam in the last 7 to 15 days. I'll make a complete video on that in the later half when the exam would be near. Now, summarizing what I have discussed today, the most important information that I would like to say again is try to keep things simple. Don't think the toppers do something extraordinary or they use some another source or they are doing something different that you are not doing. They did the same thing, but they did it with confidence and they didn't feel the FOMO that you are feeling right now. Try to follow the simple things. Try to follow the simple things, but in a good way. So follow these simple things, but follow these things perfectly, and you will definitely succeed. All the best.